स्पीच जब अपोजिट टू दिस, जब इंफॉर्मेशन डायनेमिक हो नेचर में और फ्लेक्सिबल हो, और लिसनर को लिसनर तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना और लिसनर को उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो, सो दैट वो उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे अपना एक्शन ले सके। इस कंडीशंस में स्पीच कम्युनिकेशन जो है, स्पीच प्रेजेंटेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। एज आई टोल्ड यू कि एयरपोर्ट टर्मिनल्स पे या रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन की इंफॉर्मेशन आती हैं, इवन दो पैसेंजर्स आर एट देयर प्लेटफॉर्म्स या टर्मिनल्स, तो वहाँ पे इफ एनी डिले हैपन्स और कुछ अर्ली हैपन्स, तो इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन अपडेट होती है रिगार्डिंग दैट। और अगर बहुत ज़्यादा ट्रेन लेट है तो पैसेंजर को इंफॉर्मेशन है, तो ही और शी नोज वेदर टू क्विट द ट्रेन, और या दूसरे में चेंज करना है या वेट करना ही है। सो ये इंफॉर्मेशन पैसेंजर तक दे ही दी जाती है, सो दैट वो उस तरह से अपना डिसीजन ले पाए। ओके, नाउ another thing is communication वहाँ बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ मैसेज कम्युनिकेशन वहाँ भी कई बार होता है जहाँ टू वे कम्युनिकेशंस हैं। And when the information is acted upon at the later stage, some of the common auditory display and their you know important and their important design features can be like horns. First of all is horn. So what is exactly horn? It has a capacity to produce the this has capacity to produce high intensity sounds which catch the attention easily, and they are designed to carry the sound in a particular direction. So it's an almost similar to the vessel of the pressure cooker. If you see, वो अपने आप अटेंशन खींचता है जब भी अपन घर में है। Another thing is especially a vessel. If it is whistle, if it is below intermittently, it produces high intensity sound which catches one's attention very easily. So another one is whistle, and first one was horn, and another is foghorn. Foghorn is a particular type of sound. It also produces similar sound like horns, but the difference is like sound emanating from such horn cannot penetrate through low frequency sound. Now, fog horn और horn में थोड़ा सा अंतर है। Fog horn जो है वो low frequency sounds कहलाते हैं। And then comes the buzzer. The buzzer is like it has good capacity to catch one attention who is sitting nearby the area, है ना, और बहुत मीडियम इंटेंसिटी साउंड होते हैं और आसपास के लोगों के लिए ही होते हैं। इट इज नॉट फॉर अ पर्सन हु इज प्लेस्ड somewhere very far from you. And another thing is bell. We know the bell. Bell school colleges में most common है। A bell is it's an instrument which produces medium intensity sound which can be heard over and above low frequency noises. It is like for the particular premises, उस पर्टिकुलर प्रेमिसेस में जो लोग हैं उसको सुनाई दे, या बिल्डिंग में जो लोग हैं उनको सुनाई दे। Then comes the siren. So siren is like it produces very effective and warning signal. सायरन जैसे पुलिस का सायरन है या एम्बुलेंस का सायरन है, ये सारे सायरन हैं और ये एक वार्निंग सिग्नल जैसे हैं। So if the pitch of the sound, it's like condition क्या है इसकी, if the pitch of the sound is made to rise and fall, since it produces a high intensity sound, it also utilized a very good all clear signal when it is continuously sounded at the same pitch. तो सेम पिच पे रहते हुए हाई इंटेंसिटी साउंड
जो अप और डाउन या राइज और फॉल फॉल पैटर्न को फॉलो करता है, दैट इज comes under siren category. Now we have to see कि what are controls and how we design the controls. ये हमको देखना होगा कि कौन से controls हैं, what is how what are exactly design of controls and what are the factor which affects the selection of control device. So control क्या है? Control एक device है which can transmit information to some machine. कंट्रोल्स क्या है? कंट्रोल्स इज लाइक इग्निशन, अगर हम एक कार की बात करें तो इग्निशन कंट्रोल्स क्या है, स्टीयरिंग कंट्रोल्स क्या है, गियर चेंजिंग कंट्रोल्स क्या है, एक्सीलरेटर ब्रेक और एक्सीलरेटर ब्रेक और क्लच, ये सारे कंट्रोल्स हैं. कंट्रोल टू पर्टिकुलर मशीन, कंट्रोल टू अ particular operation at the particular time. So it is termed as like it is a device which can transmit information to machine. माने operator has to transmit the information to the machine or mechanism or a system, so that it thus it has a control to select based upon the nature of information desired to be transmitted. What kind of, or we can say what kind of input or the intermediate input you are giving mm, to that machine or mechanism through which you need to take the desired output. Now the performance efficiency of human operator is affected by the nature and type of the controls also, but provided and provided with all types of machine, है ना, हर तरह के machines और equipments के साथ. A proper design goes you know प्रॉपर डिजाइन जो है वो वर्कर को इजीली ऑपरेट करने के लिए डिजाइन की जाती है, ताकि इजीली वो ऑपरेट भी कर पाए और जो एफिशिएंसी या जो डिजायर्ड आउटपुट की बात ऑपरेटर को बताई गई है वो उससे ले पाए. सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिजाइन which undergoes the things. और एक प्रॉपर कंट्रोल किसी भी मशीन का should be made like optimum for the machine. It is not minimum or maximum, it is for the optimum of the machine, and it has to draw the optimum uh, work from the particular machine mechanism or particular system. So it has to be designed by taking care of these things. Now what are the factors which affect this control this control devices? We will study these in next lecture. Number one is operational functions of the control. Number two, needs of control task. Number three is informational needs of an operator. Then space and layout requirements, जो physical requirements उनकी आएंगे. Then we'll see what are the types of control और classification of control कैसे हैं. Foot pedal है, steering है, levers हैं, कितने तरह के कंट्रोल्स होते हैं वो सब हम देखेंगे. ऑन एंड ऑफ की स्विचेस हैं, स्टैंड बाय के स्विचेस हैं, देन नॉब्स हैं, स्टीयरिंग या व्हील्स हैं, लीवर्स हैं, फुट पैडल्स भी होते हैं बहुत सारे. तो वो कितने तरीके के हैं, रोटेटरी है, लीनियर है, बेसिक क्लासिफिकेशन फिर यहाँ से चालू होता है. ये सारा we will see in our next lecture, and we'll see these things of in detail. I mean the design of controls we'll see in the detail. Till the time, if you have any doubt or if you have not heard anything due to network issue, you can ask me now, or you can ask me in the start of the next lecture also.